Okay, so let us discuss the very first characteristic of pteridophytes, and then we will move further. Okay, we will start with pteridophytes characteristics. Have you understood everything in the last class? Yes, Sana? Yes, sir. Okay, so first from pteridophytes, these are the first successful land plants, means these are the first successful vascular plants. First successful land plants. Why they are first successful land plants? Because they now they don't need water for their fertilization process, and they are not completely dependent on water, and they have uh, ability to live on the land surface, and also they have developed xylem and phloem in their structure. And that is why they are first successful land plants. Okay, then they are vascular cryptogams. Vascular cryptogams. That is, or that means they have xylem and phloem. Xylem and phloem present. What is the function of xylem and phloem? ये दोनों क्या करते हैं? Xylem transport water and phloem transport food. So दोनों ही for transportation present हैं in them, and they are having vascular structure. इसीलिए ये first successful land plant हैं. Third is they are also called as reptiles or snakes of plant kingdom. Okay, why they are now we are calling this reptiles or snakes of plant kingdom? जिसे bryophytes को like we used to call amphibians of plant kingdom. And evolution point of view से अगर हम देखें तो animal kingdom में क्या हुआ है? Amphibia and then reptilia is evolved. So similarly, evolution point of view से from bryophytes, pteridophyte has been evolved, and that is why उसको बस similarity लाने के लिए the botanists have started calling pteridophyte as snakes of plant kingdom or reptiles of the plant kingdom, just from the evolution point of view. क्योंकि bryophytes को हम लोग amphibians बोल रहे हैं, amphibians, और animal kingdom ये plant kingdom की बात कर रहे हैं. और animal kingdom में क्या होता है? हम लोग बोलते हैं किसको? Amphibians रहते हैं. Plant kingdom, sorry, animal kingdom में amphibians रहते हैं, जिसमें frogs वगैरह आते हैं. Okay? So यहाँ पे amphibian से क्या बन रहा है? Pteridophyte बन रहा है. और यहाँ पे amphibian से reptiles evolve हो रहे हैं. So इस वजह से बस pteridophytes are also called as reptiles or snakes of plant kingdom, just from the evolution point of view. Now fourth characteristic is they are having true stem, true leaves, and true root-like structure. Okay, so they have true root, true stem, and true leaf. Okay, means now this plant is bearing everything in true sense. अब तक bryophytes में क्या था? They are stem like, root like और leaf like structure they were having, but now एक point और evolve होके these pteridophytes are having true root, true stem, and true leaf structure in them. And this true root is adventitious kind of root. Okay, adventitious root. And this true stem is sometimes underground, and this underground stem is called what? Rhizome. Underground stem, and this underground one is called as rhizome. And then the leaf. Here leaf has very unique character. So here leaf is divided into two parts, means some leaves you will find in small, they are small in size, and whereas some leaves they will be in large in size. So two kind of leaves are there, leaves, and they will be of two types. One is small in size, whom we call as microsporophyll. Microsporophyll. छोटा है इसलिए micro word. Okay. Now another one is large in size. This will be called as megasporophyll. Sporophyll. Okay. Now microsporophyll is found in Selaginella. Example here, Selaginella. And here megasporophyll will be found in ferns. Okay. So their leaf is distinct and it perform various function also. Later you will see. So इस leaf में दो तरह के size हैं, एक छोटा एक बड़ा. तो the small one is called, we are calling the small one as microsporophyll and the large one as megasporophyll. Sorry, sporophyll I have attached, not sporo. Only microphyll and megaphyll, not sporo. Sporo should not be there. Okay? Microphyll and megaphyll, because we haven't talked about spores. In spores also there is two kind of spore, microsporophyll and megasporophyll. That is why I have written. So now about their leaf, they are also having very unique feature. क्योंकि pteridophytes में flower वगैरह तो रहते नहीं हैं. So the work of sexual reproduction is also done by leaves. It is very unique feature in pteridophyte. So the work of
sexual reproduction is done by leaves in pteridophytes. क्यों होता है? Because they are not having any flower or any flowering like structure. That is why the sexual reproduction is done by the leaves. And the leaves bear sporophyll or bear leaf for reproduction, and these fertile leaves are called as what? Sporophyll. The leaf bear fertile. Okay, some leaf bears fertile leaves. Or in fertile leaves, so what are we calling them? These fertile leaves are sporophylls. Now let me show you. See, these small gola structure, the little round like structure, these are what? Sporophylls. And here also you can see in detail. ये upper lower surface of leaf or upper surface of leaf, pteridophytes के leaf में you will found, and these structures are only what they are helpful in sexual reproduction, means they will have the gametes. They will have what? Male and female gamete. Male and female gamete. And इन्हीं के पास क्या होती है? Capability of reproduction. These strobili have capability of reproduction. So pteridophyte is having this unique feature कि इनके leaves में reproduction होता है. Okay. Now leaf bears fertile leaves, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्पोरोफिल्स. नाउ स्पोरोफिल्स के अंदर भी क्या हो जाएगा? स्पोरेंजिया होगा, फिर स्पोरेंजिया से स्पोर्स बनेंगे, देन स्पोर्स विल जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट. तो लेट मी राइट इट डाउन. तो स्पोरोफिल इट बियर्स व्हाट? इट बियर्स स्पोर्स. इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. स्पोर्स, व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्स आर फाउंड, एंड sporangia first. It bears sporangia, and then under the sporangia, spores will be found. So spores, what kind of spores are present and how they are formed, we will study later. Then these spores will germinate and form gametophyte. Now in the last class we have seen कि जो gametophyte और sporophyte थे उसमें क्या हो रहा था? Sporophyte was dependent on gametophyte. Now here it is the opposite. The gametophyte is actually, it is not opposite. Gametophyte and sporophyte are totally independent. Means they are capable of living existent life. They are not dependent on each other, and they are together living on the same plant. Okay. So next characteristic will be it independent alternation of generation. Means neither sporophyte is dependent nor gametophyte. Independent alternation of generation. That means neither sporophyte nor gametophyte is dependent on each other. There is no dependency between the sporophyte or gametophyte. This is the advantage in evolution. ब्रायोफाइट्स में अभी तक स्पोरोफाइट डिपेंड हो रहे थे गैमेटोफाइट पे, बट यहाँ पे स्पोरोफाइट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया है, एंड दिस स्पोरोफाइट इज ओनली फॉर्मिंग द गैमेटोफाइट. अब यहाँ से स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना स्टार्ट हो गया है. ठीक. Now we will study about the leaves in detail, because leaves are containing two kinds, microphyll and megaphyll. So how this microphyll and megaphyll are combined together and they are forming the sporophylls. Okay. So these microphyll and megaphyll, they leaves. Okay. These are what? Two kinds. One is microphyll, another is megaphyll. Now these microphyll and megaphyll are doing what? They are fertile leaves and they are forming sporophyll. So these two together will form sporophyll. And sporophyll formation will be 2n because they are what? Diploid in their structure. Now sporophyll will again contain the sporangia, and sporangia will form spores. Sporangia, and this sporangia is what? It is of 2n kind, that is diploid, and from diploid haploid spores will form, and these spores will germinate and form gametophyte. So this is the function of what? These two kinds, microphyll or megaphyll leaves, gametophyte. Now we will see the spores. What do these spores do, or what is the function of the spores? Okay, so basically in pteridophyte, spores are two kinds. One is homosporous and other is heterosporous. ठीक, homosporous means क्या? कि जिनके spores दोनों almost similar हो. There is no difference between the spores. Those kind of spores are homosporous, and heterosporous will be what? Their spores will be different in sizes. One will be small, another will be large. So two kind of spores are found in pteridophyte. Let me write this one in between. Spores. One is here, another is here.
two kind of spores will be formed, and these two kind of spores will be formed mainly homosporous, or most of the pteridophytes are capable of forming homosporous. So let me write, most of the pteridophytes are producing these homosporous spores. Okay, are producing homo, and these are what such pteridophytes will be called as homosporous pteridophytes. So you can write it down. Such pteridophytes are called as homosporous pteridophytes. अब नाउ दीज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, ये लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स स्पोर्स बनाएंगे, अगेन फॉर्म स्पोर्स. अब जो ये स्पोर्स बनाएंगे, ये स्पोर्स जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट जर्मिनेट होके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट. लेकिन जो इनके गैमेटोफाइट फॉर्म होंगे, दे विल बी मोनोइशियस. मोनोइशियस क्यों, क्योंकि दोनों होमोस्पोरस हैं, दोनों सेम स्ट्रक्चर में रहेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, सो दे विल फॉर्म मोनोइशियस गैमेटोफाइट. स्पोर्स germinate to form monoecious gametophyte. Sana, do you know what is the meaning of monoecious? What is the meaning of monoecious? Okay, so monoecious मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट एक ही जगह एक ही प्लांट पे प्रेजेंट रहे. They are not separated and they are not present on different kind of plant. Monoecious gametophyte means the male gamete and the female gamete are present on the same plant. Okay, here plant is not fully developed, so we will write male and female gamete are present on the same thallus. Male and female gamete are present on same thallus. Now monoecious gametophyte बन गया. Now this monoecious gametophyte is forming prothallus. जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में, they are forming prothallus. First small structure, this gametophyte is forming prothallus. Gametophyte will form prothallus. अब प्रोथैलस के स्ट्रक्चर इज समवॉट लाइक हार्ट शेप. ओके, लाइक दिस. इसका ये प्रोथैलस का स्ट्रक्चर है समवॉट लाइक हार्ट शेप. नाउ अब इसमें जो ये प्रोथैलस बनता है, दिस प्रोथैलस इज हैविंग वेरियस कैरेक्टरिस्टिक इन इट. मींस इट इज फॉर्म्ड इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट. इट इज नेम ऑफ का गैमेटोफाइट. जो भी गैमेटोफाइट बना है उस गैमेटोफाइट को क्या बुला रहे हैं, प्रोथैलस बुला रहे हैं. फिर जो गैमेटोफाइट है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का, means whatever gametophyte is formed in homosporous pteridophyte, those gametophytes are free living. ये लोग एकदम से फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट नहीं है स्पोरोफाइट पे, एंड दे आर self capable of their own nutrition and everything, and they are inconspicuous, they are small, and then they are multicellular, then they are green, photosynthetic, then they are protandrous. Okay, so the prothallus is having various characteristics. So we will see the characteristic of prothallus here only. First, prothallus is formed in homosporous pteridophytes. So formed in homosporous pteridophytes. Next we are having characteristic is what? It is a name of gametophyte. ये जो gametophyte बन रहा है जैसे उसका नाम है prothallus. So name of gametophyte. Now next is what? It is inconspicuous, मतलब कि ये differentiated नहीं है उतना, and their multicellular cells is having. So inconspicuous. Now they are small, then they will be multicellular, and then they are having green color. मतलब they are in green color means they are capable of photosynthesis. Green photosynthetic plant. Now they are protandrous. Now ये protandrous का मीनिंग क्या है? Protandrous मतलब pro means before and androus मतलब मेल. So इसमें जो प्रोथैलस होता है, प्रोथैलस के अंदर क्या होता है, मेल इज डेवलप्ड फर्स्ट देन फीमेल. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग हियर दे आर प्रोटैंड्रस. प्रोटैंड्रस. लेट मी राइट हियर आल्सो. प्रो मींस व्हाट? बिफोर. एंड्रस इज रिलेटिंग टू मेल. सो यहाँ पे मेल इज डेवलप्ड बिफोर फीमेल गैमेट. ओके, या बिफोर फीमेल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोएंड्रस. सो ये प्रोथैलस है. नाउ इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. एज वी हैव सीन कि ये स्मॉल होते हैं, ऑफ कोर्स स्मॉल है. नाउ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, मींस दे आर हैविंग वेरियस सेल्स इन देम. एंड इनके भी मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग बोलेंगे एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम. ओके, सो हियर समवॉट वी विल लोकेट फीमेल सेक्स ऑर्गन व्हिच विल बी लार्ज, एंड हियर मेल सेक्स ऑर्गन व्हिच विल बी स्मॉल. सो ये क्या हो गई, फीमेल सेक्स ऑर्गन. यहाँ पे क्या हो गया, मेल सेक्स ऑर्गन. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम. यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे एंथ्रीडियम. ये सब किसके अंदर है,
प्रोथैलस के अंदर, मींस प्रोथैलस जो भी है ये मेल मैच्योर होता है एंड इंश्योर करता है क्या, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो इसके अंदर, ठीक है। सो ये मेल मैच्योर फर्स्ट, क्यों मैच्योर फर्स्ट होता है, फर्स्ट टू इंश्योर पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन में भी कैसे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन इंश्योर करता है, ओके, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो इसीलिए इंश्योर कर लेता है पहले से ही डेवलपमेंट अपना, ओके। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स और होमोस्पोरस स्पोर्स के बारे में। सो द प्लांट्स व्हिच bears this homosporous spores, example will be Dryopteris, Pteris and Xylotum, and there is one given in NCERT also, I think, like Opsida. Another is very famous Equisetum. Equisetum. It is having very unique character also, Equisetum. When we will study the classification, then I'll tell you about this unique feature of Equisetum. Okay. So this is all about what, homosporous type. कि जो स्पोर्स होते हैं ये होमोस्पोरस स्पोर्स हैं, इनके पास क्या था, मोनोइशियस गैमेटोफाइट फॉर्म कर रहे थे, फिर मोनोइशियस गैमेटोफाइट जो फॉर्म हुआ है उसको हम लोग नाम दिए हैं प्रोथैलस, और फिर ये प्रोथैलस क्या है, होमोस्पोरिक टेरिडोफाइट्स में फॉर्म हो रहा है, गैमेटोफाइट का नाम है इंस्कंस्पाइकस है, छोटा है, मल्टी सेलुलर है, इसके पास ग्रीन कलर है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है, ये प्रोटैंडरस है क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेल गैमेट पहले फॉर्म हो जाते हैं टू इंश्योर द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। नाउ वी विल सी हेटेरोस्पोरी, एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके अंदर भी हेटेरोस्पोरी कंडीशंस रहते हैं, मींस हेटेरोस्पोरस फॉर्म होता है, वो क्या है, दे आर फॉर्मिंग और कैपेबल फॉर्मिंग सीड्स। सो यहाँ से जो सीड हैबिट था ना, यहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट हो, सो वी विल सी हियर हेटेरोस्पोरिस। सो वेरी फ्यू और वी कैन से फ्यू ऑफ टेरिडोफाइट्स are producing this different type of spores, are producing the different kinds of spores. उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। नाउ दिस हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, इसमें भी क्या होता है, दो टाइप के स्पोर्स बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके नाम ही है हेटेरोस्पोरस, मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, टू काइंड ऑफ स्पोर विल बी फॉर्म, वन विल बी लार्ज, अनदर विल बी स्मॉल, द लार्ज वन विल बी फॉर्मिंग मेगा स्पोरोफिल, जो कि या मेगा स्पोर कह लो, मेगा स्पोर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगी, एंड जो माइक्रोस्पोरोफिल होगा वो क्या बना लेगा, मेल गैमेट बना लेगा। सो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रही है, हेटेरोस्पोरी डेवलप हो रही है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो I will write the formation of spores here. Two different kinds of spores will be formed. कौन सा, यहाँ पे भी again we will see one will be small, one will be large. Large वाला कौन सा होगा सना, मेगा, yes, large will be macro or mega, macro spore or we can say mega spore. Ma'am, what is small means large? Okay. Sorry. Small means microspore, large वाला mega spore और we can say macro spore. अब यहीं से क्या होता है, माइक्रोस्पोर जो है वो बना लेगा मेल गैमेट एंड मेगा स्पोर जो है वो फीमेल गैमेट बना लेगा। सो मेल गैमेट एंड देन फीमेल गैमेट। सी अब यहाँ देखो, ये मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करके ही जाइगोट बनाएंगे हेटेरोस्पोरस कंडीशंस में, बिकॉज हेटेरोस्पोरस कंडीशन इज like this only कि one male gamete another female gamete। मेल गैमेट क्या होगा यहाँ पे, अगेन ये मोटाइल होगा, ये नॉन मोटाइल होंगी, सो दे विल फ्यूज एंड फॉर्म व्हाट, जाइगोट। सो जाइगोट से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनना है, सीड, बट टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं बनता, मींस सीड इज नॉट फॉर्म्ड हियर। एंड व्हाई, क्यों, इसका अब हम लोग एंजियोस्पर्म में जब देखेंगे कि एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा है, देन वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाई यहाँ सीड क्यों नहीं बन रहा है, मींस क्या यहाँ पे सीड बन के टिक पा रहा है या नहीं टिक पा रहा है, दैट वी विल सी। सो एंजियोस्पर्म we haven't studied now, but मोटे तौर पे एंजियोस्पर्म we are like seeing it the structure like ऐसे प्लांट होता है एंजियोस्पर्म का, सॉरी एंजियोस्पर्म में प्लांट is like this, they are having okay flower here and leaf kind of structure. This is angiospermic, normal angiospermic plant. Don't go on the diagram, it is very bad I know. तो यहाँ पे जो flower होता है, this flower if we will extra enlarge this, so this flower only contains what, male and female gametophyte or male and female gamete in them. So angiosperm में flask से कुछ structure ऐसे होता है, something like this is the angiospermic structure. अभी जब तुम पूरा डिटेल पढ़ोगी then you will know. तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो मेन है, they are having various wall inside them. एक तो ये ओवरी यहाँ पे होती है, ये ओवेरियन मीन्स ओवरी का वॉल होता है। देन नेक्स्ट इसके ओवरी के अंदर भी वी कैन से कि जो एम्ब्रियो सैक है वो भी प्रेजेंट होता है फॉर एक्स्ट्रा कवरिंग।
सो यहाँ पे देन एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट एंड इस एम्ब्रियो सैक के अंदर यू विल फाइंड द फीमेल गैमेट. ओके, सो ये फीमेल गैमेट यहाँ मिलेंगे. ये एंजियोस्पर्म की बात हो रही है सारी. एंड डिस्पाइट ऑफ दिस टू कवरिंग, एक ओवरी और एक एम्ब्रियो कवर, एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट के पास, उसके पास एक और कवरिंग होती है. दैट कवरिंग इज वी कॉल्ड एज इंटेगमेंट्स. When you will study the angiosperm in detail, then you will get to know. So ये स्ट्रक्चर क्या है? इंटेगमेंट्स है. ओके, सो ये तीनों स्ट्रक्चर क्या करते हैं? टुगेदर कवर कर लेते हैं पूरे, क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को. लेट मी राइट ऑल्सो सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. ये इंटेगमेंट है, इंटेगमेंट, इंटेगमेंट कवरिंग है ये. And then this one brown layer, this brown layer is what? It is ovary. And this orange layer is what? It is embryo sac. And इनके अंदर आराम से फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट जो है वो बनती हैं. देन नाउ वी विल सी कि इसमें जो ये पॉलिन ग्रेन आता है वो यहाँ से आता है. ठीक, अब इस पॉलिन ग्रेन के अंदर भी क्या है? दो गैमेट्स हैं यहाँ पे. सो वी विल टेक वन गैमेट. सो ये दोनों क्या है? मेल गैमेट है. नाउ दिस विल मेक इट्स वे थ्रू लाइक दिस एंड फ्यूज विद दिस एग and then they will what form zygote. यहाँ पे क्या हो रहा है? मेल एंड फीमेल गैमेट नाउ यहाँ पे आते हैं, यूज करेंगे एंड दे विल फॉर्म zygote. अब इनके zygote में देखना क्या डिफरेंस आता है. नाउ ये zygote बनानी है, इनके zygote से embryo बन गया. zygote will form what? Embryo. And this embryo will definitely form seed. अब pteridophytes में क्या होता है? जो इनके leafy structures में like this. So pteridophyte leafy structure में like this structure is present. One is large, one is small. This one we can take female gamete. And here this one we can take what? Male gamete. And ये male gamete और female gamete फिर वही चीज कि zygote बनाएंगे, embryo बनाएंगे. They will what? Fuse करेंगे, zygote बना लिए and this zygote will form the embryo. अब यहाँ से क्या difference आएगा? Now you see. इस leaf structure में there is no any protective covering. There is no protective covering here. इस पूरे structure में no protective covering. अब यहाँ कोई कवरिंग ही नहीं है जो भी एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है टिल नाउ. जब जो भी जाइगोट से एम्ब्रियो तक का पूरा स्टेज कहाँ हो रहा है? वो लीफ के अंदर ही हो रहा है. मतलब कि जो भी हो रहा है वो लीफ अपने अंदर कंटेन किया, मीन्स कि वो अपने मम्मी के पास ही अभी तक है. ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ऑल टुगेदर जो भी स्ट्रक्चर है वो एग और जाइगोट और एम्ब्रियो और यहाँ सीड तक की फॉर्मेशन, जो भी सीड बाद में, जब तक सीड नहीं बनता तब तक क्या रहता है? वो ओवरी के अंदर ही रहता है. मीन्स ओवरी वॉल के अंदर ही सीड बनता है एंड देन दे विल कंटेन. एंजियोस्पर्म में सीड तक के फॉर्मेशन तक का वो एम्ब्रियो वॉल, इंटेगमेंट एंड एम्ब्रियो सैक वो सब कंटेन किए रहते हैं अपने अंदर. मीन्स उसको जाने नहीं देते हैं कहीं. बट यहाँ टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? जैसे ही एम्ब्रियो बनता है, इसके पास कोई कवरिंग ही नहीं है, तो ये एम्ब्रियो क्या होता है? बस ये फॉल हो जाता है. वहां से क्या हो जाता है? फॉल ऑफ हो जाता है. ये फॉल ऑफ. और फॉल ऑफ कहाँ होगा? गिर के जहाँ जाएगा? सॉइल में जाएगा. अब सॉइल के पास तो कोई ऐसा टेक्निक है ही नहीं, तो ये एम्ब्रियो फॉल ऑफ कहाँ चला जाता है? सॉइल में. अब जब सॉइल में चला गया, सॉइल के पास कोई ऐसा टेक्निक ही नहीं है कि वो सॉइल में अपने अंदर रख के सीड कन्वर्ट कर सके. सो इसीलिए एम्ब्रियो से सीड टेरिडोफाइट्स में पॉसिबल नहीं है. अंडरस्टूड सर ना व्हाई सीड फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल इन टेरिडोफाइट्स? मींस एम्ब्रियो कुछ देर तक वहां टिकते हैं बॉडी में, लेकिन वहां ज्यादा दूर तक रुक नहीं पाते. अगर वो यहाँ जो टेरिडोफाइट की कैपेबिलिटी होती वहां की उनको एम्ब्रियो को खूब देर तक रोक पाते हैं तो शायद सीड बन जाता. बट सीड नहीं बनता है क्योंकि एम्ब्रियो fall off हो जाता है from their leaf surface. Okay, and that is why they are not capable of forming seed. इसीलिए ये लोग क्या है? seedless vascular plant हैं. इसके बाद से तुम गैमेटोफाइट और एंजियोस्पर्म जब भी देखो, सॉरी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जब भी देखो उसमें सीड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उनके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है. Have you understood why they are not forming seed? Yes, ma'am. Okay, so let me write properly the reason also. Heterosporous species in हेट्रोस्पोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि सीड हैबिट बनना कहाँ से शुरू हुआ था और सीड फॉर्मेशन कहाँ से शुरू हुआ था. सीड हैबिट टेरिडोफाइट से ही शुरू हुआ है, लेकिन सीड फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म से शुरू हुआ है. सो इन हेट्रोस्पोरस स्पोर्स जो ये फीमेल गैमेटोफाइट हैं, ये पेरेंट प्लांट पे रिटेन करते हैं. ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट retains on the parent plant. Parent स्पोरोफाइट्स किस लिए रहते हैं? थोड़े पीरियड के लिए रहते हैं, ज्यादा पीरियड के लिए नहीं रहते हैं. फॉर वायबल पीरियड्स. क्यों रहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए इनटू यंग एम्ब्रियो. दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो. ओके, एंड इसीलिए जब यंग एम्ब्रियो गैमेटोफाइट में ही हो रहा है, ठीक है, यंग एम्ब्रियो we can also write important for development of zygote into young embryo and which takes place. Okay, it takes place, or we can say which
takes place inside the गैमेटोफाइट। कौन सी गैमेटोफाइट है? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक। अब जब इसके अंदर ही हो रहा है, ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन का फर्स्ट क्या कहते हैं उसका कंडीशन है कि हेट्रोस्पोरस स्पोर जहां भी होंगे, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एंजियोस्पर्म हो, चाहे ये टेरिडोफाइट हो। अगर कंडीशन क्या है कि जो भी फीमेल गैमेटोफाइट है वो एम्ब्रियो को अपने अंदर रिटेन करेगी एंड वहां से क्या होता है, एम्ब्रियो से सीड का डेवलपमेंट होगा। लेकिन बट इन टेरिडोफाइट्स ये नॉर्मल जनरल कंडीशन है। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? Okay, we will write like this because pteridophyte is also doing this inside the gametophyte. So this event will be also what? Precursor. This event is precursor means है ना, precursor मतलब कि starting point. ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं starting point. Precursor to seed habit. Seed habit मतलब कि जो भी एम्ब्रियो है या जो भी फीमेल गैमेटोफाइट है विच इज कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द एम्ब्रियो, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक, तो हैबिट दैट इज द टेंडेंसी टू वॉर्ड और टेक केयर। वॉर्ड मतलब ही होता है टेक केयर करना, टेक केयर ऑफ दिस होल पॉइंट विल कम इन एग्जाम डायरेक्टली लाइक दिस ओनली कि सीड हैबिट प्रिकर्सर टू सीड हैबिट या सीड हैबिट का फॉर्मेशन शुरू कहाँ से हुआ। एंड ऑल्सो अगर रीजन पूछ लिया कि व्हाई टेरिडोफाइट्स आर सीडलेस, सो यू हैव टू राइट लाइक दीज ऑल स्टेटमेंट्स। ओके, टेक केयर ऑफ द व्हाट टू व्हाट और टेक केयर ऑफ एम्ब्रियो, टेक केयर टू व्हाट द सीड फॉर्मेशन which is considered as important in evolution के point of view से बहुत important है। and therefore the pteridophytes are not completely able to hold or take care of embryo, so they are not capable of seed formation. Okay, so this is the whole statement which you have to write. For evolution point of view it is very important. अगर कोई पूछे कि सीड हैबिट डेवलप कब हुआ था, तो टेरिडोफाइट में डेवलप हो चुका था, लेकिन सीड हैबिट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो ये जिम्नोस्पर्म में स्टार्ट हुआ था। एंड टेरिडोफाइट में डेवलप हुआ था लेकिन स्टार्ट क्यों नहीं हो सका? बिकॉज जो टेकिंग केयर ऑफ नेचर होता है और कवरिंग जो थी वो टेरिडोफाइट में नहीं प्रेजेंट थी, और वो एम्ब्रियो को होल्ड तो कर रहा था बट वो ज्यादा देर एम्ब्रियो को अपने प्लांट बॉडी के अंदर नहीं होल्ड कर सका और एम्ब्रियो फॉल अप करके सॉइल में गिर जाता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द टेरिडोफाइट आर नॉट एबल टू फॉर्म व्हाट सीड। एंड यही बेसिक एक मेन रीजन है, क्योंकि हेटेरोस्पोरस प्लांट जितने भी हैं वो लोग सीड बनाते हैं, बट यहाँ पे हेटेरोस्पोरस कंडीशन आया, सीड फॉर्मेशन इसी रीजन से नहीं हुआ क्योंकि एम्ब्रियो ज्यादा देर तक प्लांट बॉडी में होल्ड नहीं कर सका। अंडरस्टूड ना? यस। एंड नाउ ये भी यहाँ पे एक और चीज लिख लो कि हेटेरोस्पोरस प्लांट वो लोग जो डेवलप नहीं कर सके मेनली बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं थी और रिटेंशन ऑफ मेगास्पोरेंजियम। सो ये दो लाइन और वी कैन से 2 लाइन में हम लोग पूरी लाइन को कवर कर सकते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू आल्सो राइट दिस वन। हेटेरोस्पोरस प्लांट fails to develop seeds because पहला कि उन लोगों के पास प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं था, नो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। दूसरा, उन लोग के पास जो मेगा स्पोर था वो परमानेंटली रिटेन नहीं रह सकता था, नो। ओके, यू कैन राइट इट लाइक दिस, द रिटेंशन ऑफ व्हाट? मेगा स्पोर permanently in the or within the megasporangium has not established। मतलब कि जो इन स्पोर थे या मेगा स्पोर्स थे वो परमानेंटली मेगा स्पोरेंजियम में स्टे नहीं कर पाते, मतलब मेगा स्पोर से ही तुम्हारा आगे फीमेल गैमेटोफाइट और ये सब बनेगा। सो द रिटेंशन ऑफ mega spore permanently within megasporangium has not been established here, and that is why heterosporous plant they fail to develop seed. Okay, अब इसका example देख लो because we have seen the example here also, no? Yes, so इसका example here will be, you can remember it like Marcy। यहाँ पे सारे plant important है, you have to remember everyone। Okay, तो यहाँ पे Marsilia, then Azolla, we have studied about Azolla ना earlier। What does this Azolla do? Selaginella, then Salvinia and Isoex। ये इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। Yes, Sana, tell me what does this Azolla do? We have studied about Azolla earlier also। I have not remembered. Okay,
So this azola और anabina का जो combination था, they are used by some bacteria for nitrogen fixation. So azola यहाँ क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है. जब अभी टेरिडोफाइट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ोगी तो उसमें आएगा कि azola is helpful in nitrogen fixation. Okay, show secondary growth. आइसोइड्स क्या है इन जनरल, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, डिस्पाइट हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम इन देम, दे आर इनकैपेबल ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. लेकिन आइसोइड्स क्या है, एक्सेप्शन है. आइसोइड्स इज अ प्लांट, is a pteridophyte that is capable of showing the secondary growth. That is why it is an exception. Okay. Okay. Now we will see quickly the sex organs. Okay. What are the sex organs? See, every sex organ is composed of only two kinds. Sex organ is what? Male sex organ and female sex organ. So male gametophyte, or we can say male sex organ, and then female gametophyte, female gametophyte और फीमेल सेक्स ऑर्गन. अब जैसे ब्रायोफाइट में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन थी वो फ्लास्क शेप थी, यहाँ पे भी क्या रहेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज फ्लास्क शेप. एंड यहाँ पे भी जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें भी जैकेट लेयर रहेगा. सो समवट लाइक दिस, देयर स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. ये क्या है, ये जैकेटेड सेल है, जैकेट, और इसके अंदर जो है वो एंथीरियम प्रिज्म रहेंगे. ठीक है. और यहाँ पे ये क्या है, एंथीरियम जो है कंटेन किया रहता है एंथेरोजोइड्स. यही एंथेरोजोइड्स क्या होते हैं, लेस होते हैं नंबर में, लेस इन नंबर. अभी एक पॉइंट इससे और याद आया इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही, कि पहले एल्गी से ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, फिर जिम्नो और एंजियो में जब हम मूव करेंगे ना, तो जो ये एंथेरोजोइड मींस जो एंथीरियम है उनका नंबर धीरे धीरे कम होता जाएगा. मींस जो एल्गी है उसमें सबसे ज्यादा रहेगा, देन फिर ब्रायोफाइट्स में उससे कम, टेरिडोफाइट में उससे कम, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में धीरे धीरे बहुत कम होता चला जाएगा. ठीक. सो ये एंथेरोजोइड्स विल फॉर्म मल्टीसेलुलर antherozoids. And this thing multicellular antherozoid require क्या करता है, formation require water for movement, and इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, zoidogamy. Okay. Now, okay, antherium से antherozoids. So antherium contain antherozoid mother cells. Now this is correct. So ये मेल गैमेटोफाइट है. मेल गैमेटोफाइट में क्या हो गया कि इनका स्ट्रक्चर फिर अगेन वही जैकेटेड है, एंड जैकेटेड में क्या है, ये एंथीरियम के अंदर एंथेरोजोइड मदर सेल मिलेंगे, फिर एंथेरोजोइड मदर सेल मल्टी सेलुलर एंथेरोजोइड बनाएंगे. वहां ब्रायोफाइट्स में क्या हो रहा था, दे वर फॉर्मिंग बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइफ्लैजिलेटेड ना होकर क्या है, मल्टी सेलुलर है एंथेरोजोइड्स. मल्टी सेलुलर ही नंबर है जिसको मूवमेंट के लिए वाटर चाहिए, इसीलिए इनको मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ज़ोइडियोगैमी. नाउ फीमेल गैमेटोफाइट कैसी होती है, अगेन दे विल बी फ्लास्क शेप लाइक दिस. एंड जो फ्लास्क शेप है उसमें क्या था, फ्लास्क शेप में जो कॉलर सेल्स थे उनका नंबर 6 to 10 था, बट इनका नंबर बस 1 से 2 के बीच में रहेगा. ठीक. एंड दे विल बी हैविंग कॉलर सेल्स अगेन. यहाँ पे जो कवर सेल्स होते हैं, कवर सेल्स, यहाँ पे कवर सेल्स क्या होते हैं, ये केमिकल जैसे ब्रायोफाइट्स में रिलीज करते थे यहाँ पे भी करेंगे, बट यहाँ पे ये लोग रिलीज करेंगे मैलिक एसिड. दीज कवर सेल विल रिलीज व्हाट, मैलिक एसिड. और मैलिक एसिड क्यों रिलीज करेंगे, टू अट्रैक्ट मेल गैमेट, male gamete for fertilization. एंड यहाँ पे इनका पूरा स्ट्रक्चर ये हो जाएंगे, 1 neck canal cell, neck canal, and 1 venter cell, venter canal. ये क्या है, फीमेल गैमेट, और वी कैन से एग, और यहाँ पे एक कॉर्बुला बोलते हैं उस पे. ठीक. सो ये सेक्स ऑर्गन्स के हैं टेरिडोफाइट्स के. मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है. और द लास्ट पॉइंट व्हिच आई वांट टू राइट फ्रॉम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, evolution point of view, क्या हो रहा है, as we move from algae से जिम्नोस्पर्म की तरफ, एंजियोस्पर्म की तरफ, एंजियोस्पर्म्स. सो क्या होता है, यहाँ से यहाँ मूवमेंट में नंबर ऑफ गैमेटोफाइट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, और वी कैन लाइक दिस, नॉट नंबर, there is significant decrease in size of gametophyte. अब देखो साइज जब भी गैमेटोफाइट का जब डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो और छोटा हो जाएगा. जब और छोटा हो जाएगा तो और कम नंबर में अपना गैमेट बनाएगा. तो अल्टीमेटली वही बात है कि उनका नंबर में डिक्रीजन होगा. ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास. आई थिंक टाइम इज ऑलरेडी अप. सो डू यू हैव एनी डाउट सना इन टुडेज क्लास? No, ma'am. Okay, quickly I will share the
slide. Pteridophytes are what? They are primitive seedless vascular plant. सबसे पहले vascular plant यही लोग थे, and they have conspicuous sporophytic exposed rhizoids. Other plants like Gema, bud, plant body, they are inconspicuous independent gametophyte, and Anthillia है, partially invaded Archegonia है, four-rod necks. Now term pteridophyte was coined by Haeckel, and कितनी species है ये ज्यादा काम का नहीं है. Now habitat, they are found in cool, damp, shady places, may flourish well in sandy soil condition also. Some members like Azolla salvinia are aquatic. So here you can say यहाँ तो बिना पानी वाले एरिया में भी रह सकते हैं. Here they can also survive in a near lake-like structure. They can also survive on rocks. They can also survive on big trees and plant-like structure. यहाँ पे aquatic structure भी है. So they are having varied habitat. अब इनका प्लांट बॉडी क्या है? प्लांट बॉडी अजोला सबसे छोटा है एंड वंस लार्ज ट्रीज में भी है. ठीक. वैस्कुलर्स हैं, लीव्स स्मॉल हैं एक, और एक लार्ज काइंड ऑफ लीव्स हैं. ठीक. Vascular tissue, these plant evolved as first terrestrial plant to possess xylem and phloem, that is they are first vascular cryptogams. Now xylem consists of cricket, phloem is made of stem cells. Same here, जो भी angiosperm और gymnosperm में होता है, xylem and phloem की स्ट्रक्चर में वही चीज है. Sporophyll bear sporangia and are subtended in plant leaf-like appendages, जिसको sporophylls बोलते हैं. फिर sporophyll distinct स्ट्रक्चर बनाएगा, किसी में स्ट्रोबिलाई, किसी में कोन. सी इक्विसेटम में क्या बनाएगा? ये है स्ट्रोबिलाई. ठीक. और किसी किसी में क्या बनाएगा? कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा. मेनली कोन लाइक स्ट्रक्चर विल बी सीन इन आई थिंक सेलाजिनेला. ओके, सो नाउ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर इज सीन. ओके, these are formed by meiosis in spore mother cell. How spores germinate to give rise to inconspicuous small multicellular free living mostly photosynthetic thallus, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? प्रोथैलस. जो भी गैमेटोफाइट बन रहा है उसका नाम क्या है? प्रोथैलस. एंड टेरिडोफाइट्स जितने भी मेजोरिटी है वो होमोस्पोरस हैं एंड सम आर हेटेरोस्पोरस. कौन कौन से? सेलाजिनेला एंड साल्विनिया. ठीक. इनमें दो काइंड बनते हैं. अनदर इज दिस गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट क्या है? प्रोथैलस रिक्वायर cool, damp and shady places to grow, and then megaspore and microsporophyll germinate and give rise to male and female gametophyte. Then female gametophyte in these plants retain किस पे? पेरेंट प्लांट पे रिटेन रहते हैं वायबल पीरियड्स के लिए. लेकिन क्या होता है? वायबल पीरियड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वो उसका एम्ब्रियो फॉर्म होकर कहाँ जाता है? सॉइल में. ठीक. और स्टोर बाय मेगास्पोर. अब ये एनसीईआरटी, these are the diagram which usually come in NEET exams. डायग्राम के डायरेक्टली दे देता है. दिस वन इज इक्विसेटम, आई थिंक इक्विसेटम. So try to remember the diagram also. This one is salvinia. अभी एंजियोस्पर्म में भी एक प्लांट आएगा salvia करके, so don't be confused. And this one is selaginella. So डायरेक्ट डायग्राम ही देखें. नीट में कई बार क्वेश्चन आया है. नहीं, ये प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए आया कि whether it is pteridophyte or it is bryophyte or gymnosperm. Okay. Now I think everything is completed. See, one point is also left here. ये एक pteridophyte है. मोस्टली जो लीव्स होते हैं ना, the leaves of टेरिडोफाइट्स वो क्या होते हैं? सिरसिनेट होते हैं. सिरसिनेट काइंड मतलब कि वो अंदर की तरफ घूमे हुए होते हैं. लाइक दिस स्ट्रक्चर. ये ऐसे घूमे हुए क्यों हैं? क्योंकि ये लोग बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं, तो अपने आप को वियरिंग और टीयरिंग से बचाने के लिए दे आर ट्विस्टिंग काइंड और ट्वेल अराउंड हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ. इस स्ट्रक्चर को या इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? सिरसिनेट वेनेशन. ठीक. So this slide is completed, and next we will study, that means tomorrow we will see the economic importance and their sexual reproduction and classification. Okay, that is it for today. Have you understood every point in this? Yes, ma'am. Okay, so any other student is present today? Purvank, are you there? Do you have any doubt? If you are present, so I'm going to stop sharing the screen, then I will share the assignment.